मूक स्वीकृति और हताशा, हिंदू समाज की मानसिक बेड़िया। यह लेख डॉक्टर जय जी बंसल के द्वारा लिखा गया है। स्टॉप हिंदुद्वेषा के दो पाठक, दो विपरीत प्रतिक्रियाएं। एक मौन चाहता है, दूसरा क्रांति। दोनों इस सच्चाई के प्रतीक हैं कि हिंदू समाज ने स्थिरता को ज्ञान और चुप्पी को शक्ति समझने की भूल की है, जबकि इतिहास गवाही देता है कि सभ्यताएं शत्रु से नहीं, अपनी उदासीनता और आलस्य से नष्ट होती हैं। इस सप्ताह हमें स्टॉप हिंदुद्वेषा के दो पाठकों से ईमेल मिले और दोनों का संदेश एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहले पाठक का कहना था कि स्टॉप हिंदुद्वेषा समाज में फूट डाल रहा है और इसका काम अधार्मिक है। उनके शब्द विनम्र थे, पर लहजे में वही पुराना डर झलक रहा था जो कई हिंदुओं के भीतर अब भी बैठा है कि अपने धर्म की बात करना या अपने लिए आवाज उठाना गलत है। दूसरे पाठक का संदेश बिल्कुल अलग था। उनके शब्द पढ़ने लायक। Among groups claiming victimhood, with left liberal and Islamist networks leveraging this framework to portray Hindus as oppressors. Academic theories such as critical race theory and intersectionality studies routinely place women, LGBTQ+ individuals, and Muslims under one marginalized umbrella, while amplifying caste narratives to depict Hinduism as uniquely oppressive. This has enabled Hinduphobia to spread through schools and universities. Caste sensitization workshops, biased research, and negative framing in social sciences have created an environment where Hindu identity is stigmatized. Instead of fostering cultural confidence, Hindu students are pressured to internalize stereotypes and align with struggles unrelated to their experiences. The result is alienation and cultural uprooting. Hindu youth in the West are increasingly separated from their civilizational roots, subjected to bullying and activism that vilifies their traditions. Worse, some are being groomed into reproducing anti-Hindu narratives themselves. The combination of biased curricula, peer pressure, and ideological indoctrination poses a long-term threat, a generation of Hindus in the diaspora at risk of losing both cultural pride and authentic connection to their heritage, while being co-opted into movements that undermine it further. Campus radicalism and the deracination of Hindu youth. Our platform has done extensive coverage of the dubious funding trail of Harvard and other elite universities in the U.S. Our analysis reveals a direct connection between the major funding sources of many of these universities and the alarming rise in anti-Semitism on campuses, along with the concerning rise in pro-Hamas activism, especially in rallies organized by the Students for Justice in Palestine, SJP. Following the October 7th Hamas terrorist attack on Israel, many such rallies organized across U.S. university. इस सोच में छिपी वही उदासीनता है जिससे सभ्यताएं धीरे धीरे मिटती हैं। पहले पाठक के नाम आंखें बंद करने से सच नहीं मिटता। सच कहें तो जब कोई कहता है आप समाज में फूट डाल रहे हैं, तो असल में वह यह कहना चाहता है कृपया मुझे चैन से जीने दीजिए, मेरा भ्रम तोड़ने का प्रयत्न मत कीजिए। तो प्रिय पाठक, क्या आपको हमारे तथ्य गलत लगते हैं या फिर हमारी बातों में तर्क की कमी दिखती है? अगर तथ्य समस्या नहीं है, तो आपकी समस्या शायद मानसिक डर है। सदियों से हिंदू समाज को टकराव से बचने की आदत पड़ गई है, कुछ गलत होने पर भी चुप रहने की, आत्मसम्मान से ज्यादा शांति को चुनने की। ठीक जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, यह सोचकर कि जो दिखेगा नहीं वो उसका कुछ बिगड़ नहीं सकेगा। इस आदत के कारण ने हमने बहुत कुछ खो दिया, हमारे मंदिर, हमारी जमीनें, हमारी गरिमा, यहाँ तक कि हमारा इतिहास भी। सच बोलने को विभाजनकारी कहना असल में नैतिक पलायन है। असली एकता अज्ञान या डर पर नहीं टिक। Campuses glorified Hamas terrorists as martyrs and even called for a globalization of terror violence, openly demanding the annihilation of the Jewish state of Israel. Campus activism, fueled by the alliance of woke, left liberal, and radical Islamist forces, has left no community untouched. Hindu American youth are increasingly being drawn into this dangerously misleading activism, which is brainwashing them into becoming terror apologists while systematically severing their ties to their own cultural and civilizational roots.
There have been many instances of Indian-origin students in the U.S. being arrested or detained for pro-Gaza activism on campus over the past 2 to 3 years, with Hindu-American youth found to be involved in some of these cases. Akinthya Saivalagan, a student at Princeton University, was reportedly arrested in April 2024 after she, along with the other protesters, set up tents for an encampment in the university courtyard. Born in Coimbatore, Tamil Nadu, Akinthya was raised in Columbus, Ohio, according to media reports. In another case, Indian-American student Megha Vamori, president of the Massachusetts Institute of Technology Class 2025, was barred from attending her own graduation ceremony after delivering a pro-Palestine speech at an official event in June 2025. Such cases raise an urgent question: why are Hindu-American youth so vulnerable to woke activism on campus? The reasons are complex, involving peer pressure, academic indoctrination, lack of grounding in dharmic and cultural values, and relentless social media influence. Young Hindus in the West live in a toxic environment where they are surrounded by anti-Hindu narratives at all times. The woke ecosystem also relies heavily on trolling and public shaming to silence dissent. Without an alternate ecosystem of support, Hindu students often succumb to these pressures. The tragic case of Riddhi Patel illustrates this vulnerability. A 28-year-old Indian American, Patel was arrested in Bakersfield, California, in April 2024 for threatening to murder members of the local city council and the mayor during a pro-Palestine speech. Patel's supposedly pro-Palestine speech was laced with Hinduphobia, calling Navratri a festival of oppressors. She also invoked Mahatma Gandhi and Jesus Christ right before she threatened to murder the city council members. While the Hindu-American community quickly distanced itself from her rhetoric, condemning her Hinduphobia, Patel's story is a stark warning. Though she is not representative of the average Hindu-American youth, her case shows how easily young Hindus can be groomed into anti-Hindu narratives and radical ideologies, even at the cost of their futures and their families' well-being. Many Hindu parents in the West make sincere efforts to impart knowledge of Hindu values, culture, and traditions to their children. Yet many still fall prey to brainwashing in the woke-dominated academic environment. College and university campuses are especially hostile, and the overwhelming emphasis on personal space in Western culture prevents parents from guiding or advising their adult children too closely. This creates further distance between youth and their cultural roots. The story of Shobha Swami, General Secretary of the Coalition of Hindus of North America, COHNA, poignantly highlights this dilemma. In an interview with Infinity Foundation, Shobha shared her personal experiences to explain how and why Hindu-American families are being targeted by wokeism. Despite her and her husband's best efforts to inculcate Hindu values in their daughters and immerse them in Hindu culture, both drifted towards wokeism and Hinduphobia once they entered college. They stopped participating in Hindu festivities and family pujas, and after graduation, refused to accompany their mother to temples. One of Shobha's most painful discoveries was learning that one of her daughters was being trained by the virulently Hinduphobic organization Equality Labs. Academic Hinduphobia and Caste Narratives, our platform has extensively covered how Hinduphobia in Western academia serves as the root source of anti-Hindu narrative that later permeates media, creative industries, social media, and the think tank ecosystem. से भागता है, दूसरा उस पर चिल्लाता है। एक बीमारी को मानने से इनकार करता है, दूसरा उसके लिए चमत्कारी इलाज चाहता है। दोनों भूल रहे हैं कि 1000 साल से टूटी हुई सभ्यता को एक दशक में नहीं संवारा जा सकता। सदियों तक चले आक्रमण, जबरन धर्मांतरण, औपनिवेशिक विकृति और अकादमिक झूठों ने हिंदू आत्मविश्वास को गहराई से कमजोर किया है। इसे वापस पाना धैर्य, अनुशासन और समझदारी का काम है। यही काम स्टॉप हिंदुद्वेषा कर रहा है, नारेबाजी का नहीं, बल्कि हिंदू कथानक को फिर से लिखने का। हम उस मोर्चे पर लड़ रहे हैं जहां हर बड़ी लड़ाई सही मायनों में जीती या हारी जाती है, यानी कि मानसिक लड़ाई। किसी मंदिर को दोबारा बनाने से पहले यह विश्वास दोबारा जगाना जरूरी है कि वह मंदिर कभी आपका था। किसी अन्याय को अदालत में चुनौती देने से पहले उसे जनता के सामने उजागर करना जरूरी है,
खासकर तब जब समाज भूल चुका हो कि ऐसा कोई अन्याय हुआ है। जो लोग हमारे काम को विभाजनकारी कहते हैं, वे सच से डरते हैं। जो इसे अपर्याप्त कहते हैं, वे इसकी ताकत नहीं समझते। लेकिन दोनों की प्रतिक्रिया एक ही चीज पर है, हिंदू चेतना के जागरण पर। यह जागरण धीरे धीरे हो रहा है, और हाँ, इससे बहुतों को असहजता महसूस होती है। पर यही तो संकेत है कि कुछ बदल रहा है। विकास हमेशा थोड़ा असुविधाजनक होता है। हमारा लक्ष्य केवल सच को उजागर करना, हमारा उद्देश्य सीधा है। अकादमिक जगत, मीडिया और सार्वजनिक जीवन में मौजूद हिंदू विरोधी झुकाव और पूर्वाग्रह को उजागर करना। हम दुश्मन गढ़ते नहीं, उनका पर्दाफाश करते हैं। हम नफरत नहीं फैलाते, उसे तोड़ते हैं। हमारे हर लेख, रिपोर्ट और विश्लेषण से उस झूठ की दीवार में एक दरार पड़ती है जो सदियों से हिंदू सभ्यता के चारों ओर खड़ी की गई है। दशकों तक दूसरों ने हमें परिभाषित किया, जातिवादी, दमनकारी, बहुसंख्यकवादी कहकर। अब हम वह अधिकार उनसे वापस ले रहे हैं। कथानक की स्वतंत्रता, यानी अपनी कहानी खुद कहने का अधिकार, हर सशक्त सभ्यता की बुनियाद है। कुछ लोग पूछते हैं, शिक्षा से क्या बदलेगा? हमारा जवाब है, शिक्षा ही असली क्रांति है। हिंदू इतिहास में हर जागरण, चाहे वह आदि शंकराचार्य का हो या स्वामी विवेकानंद का, कलम से शुरू हुआ, तलवार से नहीं। जागरूकता से स्पष्टता आती है, और स्पष्टता से साहस। यही साहस सब कुछ बदल देता है।